Hello everyone. This video will show you the steps of hand hygiene in the easiest method possible and I assure you that you will never forget it. इस वीडियो को देखने के बाद हैंड हाइजीन के स्टेप्स तो आप कभी भी नहीं भूलोगे. हैंड हाइजीन पे डेडिकेटेड वीडियो अलग से उसको आप देख लेना. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैंड हाइजीन के स्टेप्स की जो आपको याद कराने की कोशिश की जाती है, जिसमें बहुत सारे टिपिकल स्टेप्स होते हैं, पाम टू पाम, डॉर्सम वगैरह वगैरह. आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट एवरीथिंग. ठीक है, यू जस्ट लीव इट आउट ऑफ योर माइंड. नो नीड टू रिमेंबर दैट. Now WHO has given 6 steps of hand hygiene. I will add one more, that is 7 steps of hand hygiene. And the first step, the most important step is remove all articles. Suppose I am wearing this watch. ठीक है, so before doing the hand washing I have to remove this watch. I am wearing this ring. So before doing hand washing I have to remove this ring. So this is the first important steps of हैंड हाइजीन, दैट इज रिमूव ऑल आर्टिकल्स. जो आपने हाथों में पहना है उसको उतार दें. ठीक है, whenever there will be a question about hand hygiene steps na, if you tell the first step as remove all articles, the assessor will not ask any more questions to you regarding hand hygiene. But if you say palm to palm, the first step, there will be a query definitely because you have not removed your watch and your rings. ठीक है, so the first step of hand hygiene is remove all articles from your hand. ठीक है, now you come to that palm to palm and all, and how to remember this? It is a very easy trick. These are your hands, this is front, this is back, these are fingers, this is thumb, and these are the tips. Okay, so hand, front, back, fingers, thumb and tips. All right, now first step of hand hygiene was to remove your articles. Then comes front to front. Okay, this step is front to front. All right, now next step is front to back. Okay, this is front, this is back, so front to back. You have to do front to back. You don't have to do back to back because that will be this. Okay, this is not a step of hand hygiene. You have to do front to back, or this is the front, this is the back, front to back. All right, so what are the steps? Remove all articles, front to front, front to back. Okay, now what are we seeing? We are seeing the fingers. ठीक है, so between the fingers. What is between the fingers? उंगलियों के बीच में. All right, now we are working on our fingers. तो fingers के steps complete कर लेते हैं. Interlocking. What you have to do? Interlocking, because these parts, these knuckles and these tips, these are not cleaned anyhow, so you have to clean them as well by doing interlocking. Okay, and while doing interlocking what you can see is your thumb. ठीक है, so the next step is thumb rotation of your both hand. Okay, now remember, do not do this by this. The thumb has to be inverted. आपको thumb को नीचे करके ही thumb को रोटेट करना है, ऊपर करके आपने रोटेट नहीं करना है. ठीक है, thumb होने के बाद क्या रह गया? आपकी tips. So last step is tip rotation. Okay, you have completed your hand hygiene. Congratulations, that's it. Now you don't have to do wrist. Why? Because in infection control practices you have to sterilize the part that you touch the most, because the tips of the fingers you touch the patient most. ठीक है, आप पेशेंट को टिप से ही तो ज्यादा टच करते हो, रिस्ट से तो नहीं करते. ठीक है, तो जो आपको सबसे ज्यादा स्टेराइल चाहिए उसको सबसे लास्ट में क्लीन करना होता है, और जब आप रिस्ट को लास्ट में क्लीन करते हो तो इसके जो जर्म्स होते हैं वो टिप के ऊपर आ जाते हैं, और यू हैव नॉट क्लीन द टिप्स आफ्टर टचिंग योर रिस्ट, so these are not getting well disinfected. All right, more details are discussed in hand washing steps on the previous videos. Now this video is only for the steps of hand hygiene. I hope I have made it clear and easy. Let's remember it once again, revise it. First part is, first step of hand hygiene is what? Remove all articles, whatever you have worn in your hand, the watch, the rings, जो भी आपने पहना हुआ है, remove all articles. Then front to front, then front to back. Okay, front to back. Then ये क्या है? अभी उंगलियां कहाँ जा रही हैं? उंगलियां ऑलरेडी बीच में जा रही हैं, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं. बिटवीन द फिंगर्स. ठीक है, अब फिंगर्स का ही काम कर रहे हैं ना, तो फिंगर्स को कंप्लीट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे. क्या बचा? इंटरलॉकिंग. ठीक है, इंटरलॉकिंग करने पे अगला स्टेप हमें क्या दिख रहा है? ये खुद ही दिखा रहा है कि अगली बारी मेरी है. दिस इज माय स्टेप. ऑलराइट, नेक्स्ट इज थंब रोटेशन, एंड व्हाट आर लेफ्ट नाउ?
these tips. So last is tip rotation, and you have to do namaste and wash your hands on the tap by running the tap from outside down. तो आपने ऐसे करके हाथ को वॉश करना है, ऐसे करके नहीं करना है, क्योंकि फिर वही बात हो गई, पानी इसको टच करेगा, the water will touch you this part and then come back to this, so these will get this will get infected. Okay, so your disinfection is not working out. When you are washing your hands with water like this, so water will touch your tips first and then go down, so these will remain disinfected and your hand hygiene steps are complete. I hope you enjoyed it. Best of luck.